Hello students, this is Disha Shah and welcome to my YouTube channel. Today's topic is progression. Progression are of three types. First is arithmetic progression, then geometric progression and harmonic progression. And since there are three types of progression, so we have divided this particular chapter into three different modules. In today's model, that is the first model, we will learn about arithmetic progression. Second model, we will learn about geometric progression. And the third model, we will learn about harmonic progression. So today's model, we will cover the topic arithmetic progression. So first, let me share the screen with you. Okay. So this is the part one. And in today's model, we will cover arithmetic progression. So what we will see, we will learn the concept of arithmetic progression and plus easy to moderate level questions of arithmetic progression. So if you are preparing for any MBA exam or MCA exam or NIMSET exam, then this module is for you. Now, first of all, before we start with the arithmetic progression, let's understand some terms. So first term is sequence. Sequence का मतलब क्या होता है? So sequence is nothing but a set of numbers arranged as per some logical rule, which need not be a mathematical formula. मतलब sequence क्या होता है कि आपको एक पैटर्न दिया होगा, एक लॉजिकल एक रूल होगा और उसके हिसाब से नंबर्स को अरेंज किया होगा. फॉर एन एग्जांपल हियर यू कैन सी दैट सम नंबर्स आर रिटन 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. This is a sequence. Now, here, how these numbers are written, what type of numbers are this? So we can see that these are nothing but the prime numbers. Okay, so this is the sequence of prime numbers. Prime numbers का as such कोई mathematical formula 100% foolproof mathematical formula नहीं है. So इसमें कोई formula नहीं है, but there is some logic, and the logic is that these are prime numbers. Now, next is series. Series is nothing but the sum of numbers. The word series is said to represent the sum of the numbers and not the sum itself. मतलब यहाँ पर आपको sum नहीं कर रहा है. This series represents कि it's a sum of numbers. For an example, if someone says that series of 6 odd numbers क्या होगा? So you have to say that it is 3 plus 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13. इसका जो आंसर होगा वो सीरीज नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड एज द सीरीज. कौन सा सीरीज है ये? दिस इज द सीरीज ऑफ 6 odd numbers. Now, the topic today is progression. So let's understand ये progression term का मतलब क्या है. Progressions are set of numbers which are arranged according to some mathematical rule. So progression में वो ही numbers होते हैं जिसके पास एक mathematical formula है. Logic तो है, but there is a mathematical formula also. Okay. For an example, 2, 4, 6, 8, 10. This is a progression. This is a progression. Okay. And why this is called as a progression? Because here the mathematical formula is that nth term is 2n. अगर हम n is equal to 1, 2, 3 ले तो ये सभी numbers का double है. So here the formula is that n is equal to 2n. तो ये एक formula है और इस formula में ये सारे numbers fit होते हैं and hence such type of numbers are called as that they follow the progression. The difference between progression and sequence. तो एक word होता है progression और एक word होता है sequence. What is the difference between progression and sequence? The difference is that progression has a specific formula to calculate its nth term, whereas sequence does not have a particular formula. जैसे कि यहाँ पर हमने एक series लिखा था progression में. The series is 2, 4, 6, 8, 10. ऐसे ये चल रहे हैं numbers. If someone asks you that find the number which will come at 200th place, ऐसे अगर हम numbers लिखते जाएंगे तो 200th place पे कौन सा number आएगा? So for that you did not write the whole progression. एक formula होगा, उस formula में हम values डाल देंगे, formula use करेंगे, so we will immediately get the answer that which number will come at 200th place, क्योंकि ये एक formula के ऊपर से ये derive हुआ है. Whereas in case of sequence, for an example, this is the sequence.
Here we have written all the prime numbers. Now here if someone asks you that which number will come at 300th place, तो ये आप नहीं निकाल सकते, ये आपको एक्चुअली में नंबर्स लिख के ही पता चलेगा. ओके, बिकॉज ये कोई फॉर्मूला के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. नाउ today's topic at progression are of three types. One is arithmetic progression, geometric progression, and harmonic progression. In today's module, we will cover arithmetic progression. So first, let's understand कि arithmetic progression क्या है, उसके concept देखते हैं, formulas देखते हैं. What is an arithmetic progression? So an arithmetic progression is a sequence of numbers such that difference between each consecutive term is constant. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जहां पर दो टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है, कांस्टेंट होता है. नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल. फॉर एन एग्जांपल, इफ आई टेक दिस नंबर्स 1 2 3 4 ऐसे, if we'll go on writing the numbers, we know that this is nothing but the set of natural numbers. So I want to check whether this particular numbers follow the arithmetic progression or not. तो क्या करना है, इसमें दो टर्म के बीच का डिफरेंस लेना है. So difference between 1 and 2 is 1, difference between 2 and 3 is 1, difference between 3 and 4 is 1, and everywhere the difference is 1, and hence we can say that these numbers follow arithmetic progression. Take one more example. Here I have written all the even numbers. Do they follow the arithmetic progression? So you can see that the difference everywhere it is 2, and hence we can say that they follow the arithmetic progression. Similarly, all the odd numbers, they also follow the arithmetic progression. क्या ये numbers arithmetic progression है? So here you can see that the difference everywhere it is 10, and hence I can say that these numbers are in arithmetic progression. So arithmetic progression में difference between two consecutive term is always constant. So suppose if I take the first term as a, and मान लेते कि ये जो progression है ना, ये एक ascending order में है, मतलब छोटे नंबर से स्टार्ट करते करते बड़े नंबर की ओर जा रहा है. So if the first number is a, and let us assume that the difference between two consecutive term is d, तो second term बन जाएगा a plus d. थर्ड टर्म क्या बन जाएगा, इट इज a प्लस डी, और इसमें एक और d जोड़ दो, सो दिस इज a प्लस 2d बेसिकली. नेक्स्ट टर्म बन जाएगा a प्लस 3d. ठीक है, ऐसे ऐसे टर्म्स बनते जाएंगे. तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस. फर्स्ट टर्म इज a, सेकंड टर्म इज a प्लस, सॉरी, second term is a plus d, third term is a plus 2d, फोर्थ टर्म इज a plus 3d. ऐसे करते करते अगर हम nth टर्म लिख दे, तो nth टर्म क्या होगा? नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म. कैन यू सी द पैटर्न? सेकंड टर्म में d था, थर्ड टर्म में इट इज 2d, फोर्थ टर्म में इट इज 3d. तो कैन आई से कि nth टर्म जो बनेगा दैट इज नथिंग बट a plus n minus 1 into d. So this is nothing but the nth term. और इसको लिखते कैसे हैं? This is called, this is how we will write tn. tn का मतलब होता है nth term. So tn is equal to a plus n minus 1 into d. Wherein what is a? A is the first term, d is the common difference, n is the number of terms, and tn represents nth term. मतलब nth टर्म पे कौन सा नंबर बैठा होगा, अगर आपको ये निकालना है तो यू हैव टू फाइंड tn. ठीक है. सिमिलरली इफ आई वांट टू फाइंड द सम ऑफ ऑल दिस n नंबर्स, इन सभी नंबर्स का सम अगर निकालना है, सो सम के लिए देयर आर टू फॉर्मूला. द फर्स्ट फॉर्मूला इज Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, wherein n is nothing but the number of terms, a is the first term, and d is the common difference. हाँ, सम निकालने का एक और फॉर्मूला भी है. सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, n by 2 into a plus l.
wherein n is nothing but the number of terms, a is the first term, and what is this l? l is the last term. आप देख रहे हो सम निकालने के दो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कंपेरेटिवली इजी है, लेकिन ये फॉर्मूला आप कब यूज कर सकते हैं? वी कैन यूज दिस फॉर्मूला ओनली व्हेन वी नो द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म पता है, यानी कि ये nth टर्म पता है, तो आप निकाल सकते हो। एंड इफ यू डोंट नो द nth टर्म, then you can use this particular formula to get the answer. So in this particular progression chapter, there are three formula. This is nth term, find out करने का formula. This is the sum of n term, and this is also the to find the sum of n terms. So write this formula. Okay, we'll solve very basic questions ताकि सारे formula clear हो जाए. First question is 5, 10, 15, 20, 25. You can see that these numbers are in arithmetic progression because the difference is constant. Till 25 terms, ऐसे 25 terms लिखे हैं. You need to find the last term. Last term यानी कि 25th term निकालना है. Okay. So T25. So we know that Tn is equal to a plus n minus 1 into d. Here a is the first term, which is equal to 5. Common difference क्या है? Everywhere the common difference is 5. And I need to find T25, यानी कि n की value I will put as 25. So the answer is 125. Okay. So अगर आप ऐसे terms लिखते जाओगे हर terms, तो 25th term पे 125 नंबर आ जाएगा. Now, if someone asks you to find 13th term, 13th term मतलब T13 निकालना है. So T13 कैसे निकालोगे? Once again, T13 is nothing but this is the formula, a plus n minus 1 into d. Here the number of terms are now 13, so I will write 13 minus 1 into 5. So answer is 5 plus 60, that is equal to 65. खैर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो ऑब्जर्वेशन से भी हम पता चल ही रहा है कि आंसर 65 बनेगा. नाउ इफ दे आस्क यू टू फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी कि ये जो 25 के 25 टर्म है, इसका सम क्या होगा? तो सम का हमारे पास दो फॉर्मूला है, बट इन दिस पर्टिकुलर केस सिंस वी नो द लास्ट टर्म, करेक्ट, वी नो दैट द 25th टर्म इज 125, तो हम इजी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट, so sum of 25 terms is nothing but 25 by 2 into first term is 5 and the last term is 125. So this is 25 into 65. 25 into 65 कितना होगा? 25 5 are 125, 12 carry forward, 25 6 are 150, 150 plus 12 162. So answer is 1625. ठीक है. Next, first term of an AP is 22. So A is 22. Common difference is 3. Find the 49th term. It means that n is equal to 49. We need to find T49. Formula क्या था? This is the formula. First term is 22. Number of terms are 49. One 44 plus 22, 54, 64, 66. So answer is 166, option E. Next. Nth term of an AP is 27. यानी कि Tn is equal to 27. First term is 3. It means that A is equal to 3. Question is, sum of n terms will be multiple of. मतलब जो सम निकालेंगे हम ये n टर्म का, ये किसका मल्टीपल होगा? Okay, now here the thing is that we know the first term as 3 and we know the last term as 27. तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म पता है, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं. हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, डिफरेंस नहीं पता, दिस वी डोंट नो.
So first term is 3, last term is 27. So it is n by 2 into 30. So that is equal to 15n. यानी कि ये जितने भी टर्म्स है अगर हम उसका सम निकालेंगे तो आंसर कुछ भी हो, वी डोंट नो द आंसर, करेक्ट, बिकॉज वी डोंट नो द नंबर ऑफ टर्म्स, बट इतना हम श्योर बोल सकते हैं कि जो भी आंसर होगा इट वुड बी मल्टीपल ऑफ 15, करेक्ट, क्योंकि आंसर 15n बन रहा है. नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 340 and 1000 which are divisible by 3? Okay. So we want to, first of all, we have to take only those numbers which are divisible by 3, and the range is given as it should be between 340 and 1000. Now 340 number क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता. We know the divisibility rule of 3. ये 3 से डिवाइड नहीं होता, so we can't take this. 341 क्या 3 से डिवाइड होता है? No, this is also not divisible. 342 क्या ये 3 से डिवाइड होता है? Yes. Here the sum is nothing but 9. So this number is divisible by 3. So the first number after 340 which is divisible by 3 is 342. Next आएगा 345, then 348. ऐसे करते करते आपको 1000 तक जाना है, but we know that 1000 is not divisible by 93. तो एक नंबर और कम कर देते हैं. 999 is divisible by 3. तो we need to find कि इनके बीच में कितने टर्म्स हैं. 342 से लेके 999 तक कितने टर्म्स हैं. ओके, फर्स्ट वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यूजिंग द फॉर्मूला एंड देन वी कैन सी कि विदाउट फॉर्मूला भी कैसे निकाल सकते हैं. तो हियर वी विल यूज दिस फॉर्मूला Tn is equal to, we need to find the number of terms, मतलब n निकालना है. Tn is a last term, so this is 999. First term is 342, and everywhere the difference is of 3. So we can say that 3 into n minus 1 is equal to 9 minus 4 is 5, 9 minus 3 is 6. So n minus 1 is equal to 657 by 3. That is equal to 219. So n is equal to 220. So answer is option A, 220. खैर इसमें वो जरूरत भी नहीं था, इसमें ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं था. Why? Because you can see that the options are very far from each other. तो हम सीधा सीधा ऐसा कर सकते थे कि 999 माइनस 342 दैट इज इक्वल टू 657, और 657 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो मोटा मोटा आंसर 220 के आसपास जाएगा. तो हम 220 पे टिक कर सकते थे. ठीक है. नेक्स्ट, number of sweets eaten by each of the 9 contestants in competition are in arithmetic progression. What will be the effect on the average of the number of sweets eaten if we eliminate the number of sweets eaten by the winner and the person who stood last? So there are 9 contestants. ठीक है. And the numbers are in arithmetic progression. Numbers are in arithmetic progression. ठीक है. तो इसमें से विनर कौन होगा? जिसने सबसे ज्यादा स्वीट खाए होंगे. सो लेट अस पुट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो ये जो होगा ये सबसे लूजर होगा, ये सबसे कम वाला स्वीट खाया है, तो दिस पर्सन हैज लॉस्ट द गेम एंड दिस पर्सन इज द विनर. नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी कैंसिल दिस टू? इज देयर एनी चेंज इन द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्वीट्स? एवरेज में कोई भी फर्क पड़ेगा? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर ऐसा है, हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, 13579. ठीक है. इनका एवरेज क्या होता है? 13579 का एवरेज होता है एग्जैक्टली मिडल नंबर. व्हेन द नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एवरेज जो होता है वो एग्जैक्टली बीच वाला नंबर होता है. सो हियर द एवरेज इज 5. बट इफ आई कैंसल दिस टू, नाउ द नंबर्स आर 357. इसका एवरेज क्या होगा? Here also the number is exactly the middle number which is 5. So उस यहाँ और यहाँ कैंसिल करने से एवरेज में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. सो एवरेज रिमेन्स सेम, ना कम होगा ना बढ़ेगा,
क्योंकि दोनों एक्सट्रीम लेवल के लोगों को हमने निकाल दिए। ओके, so when the numbers are in arithmetic progression and we have to assume the numbers, तो आप नंबर को इस तरह से assume कर सकते हो. You can assume the first number as a, second number as a plus d, and the third number is a plus 2d. This is how you can assume the number. This is one method of assumption. दूसरा मेथड में आप ये कर सकते हो कि ये जो बीच वाला नंबर है ना, ये बीच वाला, उसको a मान लेते हैं, इसको हम a प्लस डी बोलेंगे और इसको a माइनस डी बोलेंगे. दिस इज द सेकंड वे थ्रू विच यू कैन अज्यूम द नंबर्स. नाउ इसका फायदा ये होता है ना कि अगर आप इन सबका सम कर देते हैं, सो a माइनस डी प्लस a प्लस डी विल बिकम 3a. जबकि यहां पर सम कितना हो रहा है, a प्लस डी प्लस 2d दैट इज इक्वल टू 3d. तो यहां पर सम इज बिकमिंग a प्लस 3d एंड हियर द सम इज बिकमिंग 3a. सो आउट ऑफ टू वेरिएबल्स यहां पर एक वेरिएबल चला गया, d एलिमिनेट कर दिया हमने. सो अगर नंबर्स व्हेन इट इज गिवन दैट द नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अगर सम दिया है, देन इट्स बेटर दैट यू अज्यूम द नंबर लाइक दिस. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस यू हैव टू अज्यूम द करेक्ट वे ऑफ numbers. Suppose there are 5 numbers in AP, then how we will assume? You can assume the number like इसको a बनाएंगे, this will become a plus d, a minus d. Here we'll write a plus 2d and here we'll write a minus 2d. Okay. Now the problem comes when there are 4 numbers in arithmetic progression. यहां पर तो हमने बीच वाले को a बना दिया, यहां पर भी और यहां पर भी. But here there are 2 numbers in the middle, not one number, 2 numbers. So in that case you can assume this number is a plus d, this number is a minus d. So दोनों के बीच का डिफरेंस हो रहा है 2d का, and hence this number will become a plus 3d, this number will become a minus 3d, because everywhere we want the difference not to be d, but we want the difference to be 2d. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन अज्यूम द नंबर्स. यहां पर भी हर जगह पे अगर हम प्लस करेंगे तो एंड में ये डी वाले टर्म्स निकल जाएंगे. यहां पर भी सब जगह पे डी वाले टर्म्स निकल जाएंगे, सिर्फ ए बच जाएगा. नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अरिथमेटिक मीन. ओके, so if a b c are in arithmetic progression, then arithmetic mean जो होता है, जो वो बीच वाला नंबर होगा, that is b, which is equal to a plus c by 2. कैसे? Now suppose 3 numbers are in arithmetic progression and the numbers are a b c. ठीक है, now since they are in arithmetic progression, it means that the difference between the consecutive term is constant. इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है b माइनस a और इन दोनों का डिफरेंस हो रहा है c माइनस b. सॉरी, c minus b. This is the difference, and this two difference has to be same. It means that b minus a is equal to c minus b. From this I can say that 2b is equal to a plus c. So b is equal to a plus c by 2. ठीक है, और when the 3 numbers are in arithmetic progression, तो arithmetic mean क्या होता है, ये बीच वाला टर्म होगा, this will become the arithmetic mean. So b is the arithmetic mean और उसका फॉर्मूला है a plus c by 2. ठीक है, so find the arithmetic mean of 1 and 7. It means that 1 is a and c is 7. इस तरह से है नंबर, this is 1, this is 7, and you need to find the arithmetic mean. ये वाला नंबर निकालना. तो ये a है, ये b है, ये c है. We know that the formula is b is equal to a plus c by 2. So it is 1 plus 7 by 2, that is equal to 4. तो ये बीच वाला नंबर बन जाएगा 4. Okay, so this is the arithmetic mean of 1 and 7. 4 is the arithmetic mean. But 1 and 7 के बीच में अगर 2 टर्म्स है और इन दोनों टर्म को आपको निकालना है, फाइंड 2 टर्म्स बिटवीन 1 and 7, तो कैसे निकालेंगे? सो हियर वी कैन सी, दिस इज जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन, वी कैन सी दैट यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, बिकॉज वी वांट द डिफरेंस टू बी सेम.
नाउ एक चीज का हमेशा ख्याल रखिए कि व्हेन द नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अगर आपको उनका एवरेज निकालना है तो बहुत आराम से आप एवरेज निकाल सकते हो। द फॉर्मूला इज फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। जैसे कि ये कुछ नंबर्स लिखे हैं मैंने, ऐसे करते करते 499 तक नंबर्स लिखे हैं एंड समवन आस्क यू कि इसका एवरेज निकालो, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, that is 1 plus 499 divided by 2, so 500 का half is 250, so average हो जाएगा 250। okay, let's see the question। निमसेट 2008 का क्वेश्चन है, if mean of first n natural number is equal to n plus 7 by 3। now मीन यानी कि एवरेज, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर वी नो इट स्टार्ट्स विथ 1 2 3 4 ऐसे, और ये कहां तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। इसका मीन यानी कि इसका एवरेज क्या होता है, सो वी नो दैट एवरेज इज नथिंग बट, सिंस द नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एवरेज इज नथिंग बट द फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाय 2। फर्स्ट नंबर इज 1, लास्ट नंबर इज n डिवाइड बाय, ये बन गया एवरेज। बट यहां पर एवरेज ये दिया है, here they have given that this is the average n plus 7 by 3। from this we have to find the value of n, cross multiplication, so 3 into 1 plus n is equal to 2 into n plus 7। from this I can say that n is equal to 11, option C is the correct answer। now find three arithmetic means between 44 and 92। so 44 and 92 के बीच में there are three arithmetic means, this you need to find out। एक तो मेथड है कि हम कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करें एंड वी गेट द आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट से कैसे सॉल्व करते हैं दैट आई विल शो यू फर्स्ट एंड देन वी विल सी द ट्रिक। नाउ दिस इज द फर्स्ट नंबर, सो इसको हम ए बोलेंगे, एंड दिस इज द लास्ट नंबर, तो इसको हम टी एन बोलेंगे। एंड हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, 1 2 3 4 5, so number of terms are 5, we don't know the difference, so first we will use this formula tn is equal to, so tn, that is the last term is 92, first term is 44, number of terms are 5, कॉमन डिफरेंस नहीं पता, so 4d is equal to 92 minus 44, 12 minus 4 8, 8 minus 4 is 4, so d is equal to 12। it means that the difference between the consecutive term is 12, so 44 में 12 ऐड कर देंगे तो 56, 56 में 12 ऐड करेंगे 68, और 12 ऐड करेंगे 80 and then 92। now you can see that these numbers are in arithmetic progression, so बीच के तीन numbers कौन से हैं, 56 68 80, so this is the answer। this we have done it through concept, if the numbers are big then you can use the concept, but here we can solve this question without doing all this thing। see, arithmetic mean क्या होता है, basically arithmetic means that the numbers are in arithmetic progression। when the numbers are in arithmetic progression, there are few condition, numbers arithmetic progression में कब होते हैं, when the difference is constant। तो आप देख लो कि difference constant कहां पर आ रहा है, first option is 56 68 80, difference 12, difference 12, ठीक है, और ये नंबर 44 है, ये नंबर 92 है, डिफरेंस 12, डिफरेंस 12, देख रहे हैं सब जगह पे डिफरेंस 12 का है। क्या यहाँ पर है डिफरेंस 12 का, और सॉरी डिफरेंस सेम है, 54 67 80, डिफरेंस 13, डिफरेंस 13, बट द लास्ट टर्म इज 92, so here the difference is 12, so this is not working। 55 67 डिफरेंस इज 12, 67 to 80 डिफरेंस इज 13, तो ये भी नहीं होगा। 53 to 65 difference is 12, 65 to 80 difference is 15, तो ये भी नहीं होगा, so only first is the correct answer। next, sum of three numbers in AP is 24, so there are three numbers in arithmetic progression and the sum is 24,
and the product is 40. Sorry, 440. Find the numbers. Now, first of all, numbers are in arithmetic progression. It means that the difference has to be same. So आपको क्या करना है, ये देखो कि कौन से ऑप्शन में ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. What are the three conditions? The first condition is that difference should be same. Second condition is that sum should be 24, and the third condition is that product should be 440. कौन सा नंबर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? तो फर्स्ट नंबर इज 5, 8, 11. ठीक है, डिफरेंस सेम है. यस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस. अच्छा, नेक्स्ट 4, 10, 11, क्या डिफरेंस सेम है? नहीं. 6 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस. तो ये वाला तो निकल गया. 3, 9, 12, डिफरेंस इज 6, डिफरेंस इज 3, निकल गया. 5, 7, 12, डिफरेंस 2, डिफरेंस 5, ये भी निकल गया. सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज सेटिस्फाइंग द फर्स्ट कंडीशन. तो आगे फिर देखना ही नहीं है, क्योंकि एक ही नंबर है जो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. नाउ राइट डाउन दिस फॉर्मूला. तो वीडियो को पोस्ट करके ये फॉर्मूला लिख लो. सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज नथिंग बट n इंटू n प्लस 1/2. सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1. ऑड नेचुरल नंबर्स है तो उनका सम होता है n स्क्वायर. And sum of the square of the first and natural number is n into n plus 1 into 2n plus 1/6. और अगर क्यूब है तो सम का फॉर्मूला है n into n plus 1/2 का होल स्क्वायर. Here we need to find the sum of these numbers. 1 square plus 2 square plus 3 square plus 4 square. So we know that this is the formula. Sum of square of first and natural number is n into n plus 1 into 2n plus 1/6. ठीक है, यहां पर n कितना है? सो देर आर 13 टर्म्स. सो n इज इक्वल टू 13. सो आंसर इज, इसमें हम वैल्यूज डालेंगे एंड वी विल गेट द. सो 13 into 14 into 26 plus 1, 27 डिवाइड बाई 6. 3 से डिवाइड करेंगे 2, 3 से डिवाइड करेंगे 9, 7. So it's basically 13 into 7 into 9. Okay. 13 7s are 91. 91 into 9 is 819. So option D is the correct answer. Now, okay, here you need to find the value of the numbers 11 square plus 16 square plus 17 square till 30 square. ठीक है, हमें पता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर ये होता है. ठीक है, तो हमने ये बहुत आराम से निकाल दिया. बट हियर द प्रॉब्लम इज दैट कि द स्क्वायर इज नॉट स्टार्टिंग विथ 1. अगर ऐसा होता 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 30 स्क्वायर, तो हम क्या करते? n इज इक्वल टू 30 लिख के इस वाले फॉर्मूला में डाल देते एंड वी वुड हैव गॉट द आंसर. बट हियर द नंबर्स आर स्टार्टिंग विथ 11. सो इस केस में क्या करेंगे? वी कैन डू लाइक दिस. पहले हम ये करेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 30. ठीक है, लेकिन हमें तो 11 से चाहिए, मतलब हमें फर्स्ट 10 नंबर का सम नहीं चाहिए. तो उसको माइनस कर देंगे. इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से. ठीक है, सो हियर वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला. हियर आई विल पुट n is equal to 30 and here I will put n is equal to 10, and if we'll solve this we will get the answer. So 30 into 31 into 61 upon 6 minus, put n is equal to 10, so it is 10 into 11 into 21 upon 6. Okay. So 31 into 5 is 155 into 61 minus, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 2, इसको 3 से डिवाइड करेंगे 7, इसको 5 माइनस 11 इंटू 35. मैंने 11 से पहले इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे 11 का ट्रिक
पता है, ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा करेंगे ना। 155 इंटू 61 कितना होता है? सो 155 इंटू 6 कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 930। सो दिस इज सो 155 इंटू 60 हो जाएगा 9300, बट ये 60 नहीं है, ये 61 है, तो प्लस 155 और कर देंगे। सो इट इज 9455 माइनस 35 इंटू 11, 11 का ट्रिक पता है, सो इट इज 3 5 बीच में 8, तो माइनस 385। 15 माइनस 7, 7 वाले कितने हैं? दो लोग हैं, सो आंसर इज 9070। निमसेट 2011 का क्वेश्चन। आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को क्यों ना हम सीधा स्क्वायर करके ही कर दें, 121 प्लस 144 प्लस 169, ऐसे करते करते 900 तक। ये बहुत बड़ा हो जाएगा बिकॉज देर आर 20 टर्म्स, तो 20 टर्म का स्क्वायर कौन करेगा, सम कौन करेगा? दैट विल टेक मोर टाइम। नेक्स्ट, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। अगर हमें क्यूब का, नंबर के जो क्यूब से उसका सम करना है, तो फॉर्मूला ऐसा है, इट इज n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और पूरे का स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ हियर यू कैन सी दैट you need to find the sum of all these numbers. क्या ये नंबर क्यूब्स है? नो, दिस नंबर्स आर नॉट क्यूब, बट these are the neighbor of the cube. कैन आई से 7 is nothing but 8 minus 1? 7 क्या होता है? 8 minus 1, और 8 क्या है? इट इज 2 क्यूब माइनस 1। 26 क्या है? 3 क्यूब माइनस 1। 63 4 क्यूब माइनस 1, और ऐसे ऐसे 1330 तक जाना है। 1330 क्या होता है? इट इज बेसिकली 11 क्यूब माइनस 1। ठीक है, सो ये ऐसा है। सो दिस इज नथिंग बट 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब टिल 11 क्यूब, और उसमें से माइनस करना है। कितना माइनस करना है? जितने टर्म्स है उतना एक माइनस करना है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट होके 11 तक जा रहा है। कितने टर्म्स हो गए? 2 से स्टार्ट होते 11 तक जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 10। ऐसे 10 टर्म्स है, तो 10 टाइम्स हम 1 1 माइनस करेंगे, यानी कि 10 माइनस करेंगे। नाउ हियर द प्रॉब्लम इज दैट कि दिस वन इज स्टार्टिंग विथ 2 क्यूब। ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है? फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मतलब इसमें 1 भी आ जाता है, बट 1 तो है नहीं, तो 1 भी डालना पड़ेगा। सो दिस इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल 11 क्यूब माइनस 10। अभी ये 1 डाला है तो माइनस भी करना पड़ेगा, सो माइनस 1 क्यूब। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला, we'll use the formula. So n is equal to, we'll put 11. So it is 11 into 12 upon 2 का square minus 10 minus 1 cube is minus 11. So this is 11 into 6 का square minus 11. So 66 का square minus 11. Once again, 66 का स्क्वायर कैसे निकालना है ये आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप वो स्पीड मैथ का मेरा वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है कि कोई भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है मेंटली। 66 का स्क्वायर क्या होता है? तो बेसिकली 66 जो है वो 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। सो वी विल डू इज 25 प्लस 16। 25 प्लस 16 हो जाता है 41, एंड 16 का स्क्वायर इज 256। So here we'll write 56 and this will become 4356. So this is 4356 minus 11. 56 minus 11 होता है 45. So answer is 4345. Option D is the correct answer. ओके, वंस अगेन आप इसमें सोच सकते थे कि क्यों ना इससे अच्छा मैं यही कर दूं, 7 प्लस 26 प्लस 64 प्लस 124 प्लस 216, सॉरी 216 नहीं, 215 प्लस 342, ऐसे। हाँ, आप ऐसे कर सकते थे इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि देर आर ओनली 11 टर्म्स, तो ये करते तो भी हो जाता। नेक्स्ट, बट अगर नंबर्स और ज्यादा हो गए देन इट्स बेटर टू यूज द फॉर्मूला। नेक्स्ट, 6 क्यूब प्लस 7 क्यूब टिल 10 क्यूब, ये निकालना है आपको।
Definitely this can be done like this. 216, 6 का क्यूब 343, 7 का क्यूब 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 and 10 का क्यूब 1000. I feel in this particular case since the numbers are less, तो आप ऐसे करोगे तो आंसर आ ही जाएगा. कितना हो रहा है? 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 7 8 0, 6 11 18. So answer is 2800. बहुत आराम से हमने निकाल दिया आंसर. बट हाँ, अगर बहुत ज्यादा नंबर्स होते then we cannot use this method. So let's understand the concept also. Okay, once again, how we will do this? 6 cube से start हो रहा है. So first we will start with 1 cube. 10 cube तक लिखेंगे and minus 1 cube से लेके 5 cube वाले numbers को हम कर देंगे minus. We will use this formula. Here I will put n is equal to 10 and for this I will put n is equal to 5. So it is 10 into 11 by 2 का square minus 5 into 6 by 2 का square. So this is basically 55 का square minus 15 का square. 55 का स्क्वायर आई बिलीव आता होगा सबको निकालने. नहीं आता है तो स्पीड मैथ्स का लेक्चर रेफर करें. 55 का स्क्वायर होता है 3025 एंड 15 का स्क्वायर होता है 225. 25 minus 25 0, 30 minus 2 is 28. So answer is option C. Next, this is a beautiful question. Find the sum of 20 terms of series. Now यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है आप देख रहे हो. दिस इज -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. ऐसा है ये. ओके, नाउ हाउ वी विल डू दिस. तो कुछ ऐसा है -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ऐसे आपको 20 तक लिखना है. तो लिखते जाओगे तो एंड में आ जाएगा -19 का स्क्वायर एंड +20 का स्क्वायर. दिस इज हाउ यू हैव टू डू. ओके, now how to solve such type of question. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Can I say we can, this is nothing but 2 square minus 1 square. Similarly, what is this? 4 square minus 3 square. और एंड में आ जाएगा 20 square minus 20 square. ठीक है. Okay, now what is 2 square minus 1 square? This is of the form a square minus b square, which is nothing but a plus b into a minus b. तो 2 square minus 1 square क्या होगा? 2 plus 1 into 2 minus 1. ठीक है. So this is nothing but 3 into 1. Similarly, 4 square minus 3 square क्या होगा? Sorry, 4 square minus 3 square. It is 4 minus 3 into 4 plus 3. So that is nothing but 7 into 1. मतलब आप देख रहे हो हर जगह पे क्या हो रहा है? a square minus b square ऐसा बन रहा है. It is nothing but actually it is a plus b only, क्योंकि a minus b की वैल्यू तो 1 हो रही है. तो सिमिलरली 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 2 + 1 होगा. 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 4 + 3 होगा. 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 6 + 5 होगा. और ये सबके बीच में भी प्लस का ही साइन है. सो बेसिकली ऐसे जा रहा है +20 + 90. तो बेसिकली ये क्या लिखा है? दिस इज नथिंग बट 1 + 2 + 3 + 4 टिल 20. इस तरह से है. ठीक है. और इसका हमें सम निकालने आता है. If you want to find the sum of first 20 natural number, तो फॉर्मूला है n into n plus 1 by 2. ये फॉर्मूला हमने देखा था यहाँ पर. देख लीजिए एक बार. सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n into n plus 1 by 2 यहाँ से ही उठाया है. So here n is equal to 20. So 20 into 21 by 2. So answer is
210. Answer is 210. Okay. So with this, in this particular module, we have learned the concept and easy to moderate level questions plus NIMSET के भी हमने कुछ questions solve किए of the topic arithmetic and of arithmetic progression. In the next module, we will cover geometric progression, and in that after that we will also cover harmonic progression. ठीक है? So if you like my way of teaching, then please like and share करें channel को and keep on practicing math because math is easy. Thank you.